Hello everyone, I hope you all are good and you all are practicing questions. Let us for now get at this one. Which of the two waveforms shown in figure has a higher RMS value? What is RMS value of voltage? RMS value is that DC value of alternating voltage which will produce same power loss across the resistor as will get produced by the AC voltage across that register. जैसे अगर आपके पास ये register हो and you are feeding this AC voltage across it and then some power is getting generated over here, some power is getting consumed by this register, then for same power consumption through a DC source we need to supply it with certain voltage and that voltage will be VRMS. Same register we have taken here. This is if this is R0, this is also R0. If power loss at both places are same, then DC value of voltage that we are going to apply will be equal to VRMS. ठीक है? So VRMS हम निकालते कैसे हैं? इसको निकालने के लिए आप RMS को सही से read करो. So start reading it from the right and go towards left. First, you have to square that function. So if you are calculating RMS value of voltage, which is given as a function of time t, then first you will square it. So किया square. Then you will take the mean of it. Mean of it कैसे लोगे? Average निकालो in one time period. ठीक है? So we have taken the mean of it, and after that you will take the root. So this will give you the RMS value. डन है. सो हाउ टू डू इट हियर. सो सबसे पहले फर्स्ट का निकालते हैं. अगर आप इसका इक्वेशन लिखो, जैसे मैं डायरेक्टली ग्राफ देखकर सिमेट्री देखकर नहीं कहने वाली कि आंसर सेम होगा. लेट अस गो थ्रू इट एक्चुअली. अगर आप करने लगोगे ना तो आपको सिमेट्री दिखने लगेगा. सो लेट अस सॉल्व इट मैथमेटिकली फॉर दैट. अगर आप इसको ध्यान से देखो तो फर्स्ट केस में हम निकालने जा रहे हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t. सो v t को आप क्या लिख सकते हो? दिस इज सिंपली ए स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द सेंटर. स्लोप क्या होगा तुम्हारा? v नॉट बाई टी. सो v नॉट बाई टी इंटू टी. स्लोप विल बी पॉजिटिव, राइट? सो y इक्वल टू mx मैंने लिखा है. y इज v एंड x इज t. सो दिस इज दिस. अब देखो इसका अगर हमें निकालना है आरएमएस वैल्यू, स्क्वायर कर लो सबसे पहले. So V naught square by T square. This is T का स्क्वायर. इसका एवरेज निकाल लो. 0 से T, I mean आफ्टर T टाइम इट इज गेटिंग रिपीटेड, है ना? ऐसा ऐसा 0 से T, T से 2T, I mean T is the time period as seen from the graph 1, right? So यहाँ से आप dt लिखो 0 से T. अब आप इसको सॉल्व करो. अगर आप इसको सॉल्व करते हो क्या मिलेगा? V नॉट स्क्वायर बाई T स्क्वायर, है ना? एंड दिस विल बिकम हाउ मच? टी क्यू बाई थ्री डिवाइडेड बाई हाउ मच? इसको लिमिट रखी दो. टी क्यू बाई थ्री डिवाइडेड बाई दिस विल बिकम टी. सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? वी नॉट स्क्वायर बाई थ्री, right? And in this case, if you now take the root, because ultimately you need to take root for calculating RMS. So in first case, V RMS is equal to how much? Root under V naught square by 3. So this will give you V naught by root 3. So first case के लिए हमें क्या मिला? यहाँ पे मिल रहा है V naught by root 3. Now we need to look at the second graph. अगर आप second graph को ध्यान से देखो, then it will get repeated after it like this, right? So this is a triangular waveform like this. अब यहाँ पे टाइम पीरियड क्या दिख रहा है? 0 से 2t दिख रहा है, t नहीं दिख रहा, राइट? सो 0 से 2t के लिए आपको पहले ग्राफ का वैल्यू आप लिख लो, इक्वेशन लिख लो. सो 0 से t तो सेम यहाँ जैसा है. सो अगर अगर आप लिखते हो v नॉट बाई दैट विल बिकम t. दिस विल बी vt. ठीक है? फॉर what टाइम इंटरवल? फॉर टाइम ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू what? t. ठीक है? एंड फॉर टाइम ग्रेटर देन, sorry, एक second, let me write it here. So for time greater than your t but less than equal to 2t, what will be the equation? Equation will be of this line. Both these lines have the same slope. You can see क्योंकि यहाँ पे भी ये v naught है and this is t. 2t minus t, that is t. Slope is same but one is positive, another will be negative because it is making an angle of I mean greater than 90 degree with the positive direction of x-axis. So it has negative slope. And इसका अगर आप equation लिखोगे y equal to mx plus c ले लो. m का value क्या है? m का value है minus v naught by t, right? And what will be this c? So put it there. एक काम करो, y को v voltage ले लो
एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी. स्लोप क्या है तुम्हारा? माइनस वी नॉट बाई टी प्लस सी. नाउ दिस ग्राफ, दिस स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2t0. So put the value of v equal to 0. Put the value of t equal to 2t, and then you will be getting the value of what? C. C is equal to how much? 2v naught. सो आप इसको केयरफुली ध्यान से लिखो. y इज इक्वल टू हाउ मच, यानी कि v इक्वल टू 2v0 माइनस v0 बाई t इंटू टी. सो एक काम करो, v0 बाई t को कॉमन ले लो एंड देन यू विल बी गेटिंग हाउ मच? यू विल बी लेफ्ट विथ 2t माइनस t, राइट? सो दिस इज व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ v. अब आप इसका क्या करो, रूट आई मीन स्क्वायर करो, मीन ले लो. सो स्क्वायर करके अगर मीन लेते हो तो सबसे पहले क्या लिखोगे? वी नॉट बाई टी, इसका स्क्वायर, टी स्क्वायर, एंड देन यू विल बी राइटिंग डी टी. दिस विल बी फ्रॉम जीरो टी से टी प्लस टी से टू टी, एंड देन यू विल बी डूइंग व्हाट? वी नॉट स्क्वायर बाई टी स्क्वायर एंड टू टी माइनस टी का स्क्वायर डी टी, and divided by how much? dt 0 से 2t, right? This is what we are going to say. See, right, sorry, yeah, this is what we are going to write. So this one and this one, there are two integrals, and I can clearly see here these two integrals are symmetrical. If you are not able to see it, then I will show you. जैसे यहाँ पे देखो, दोनों में constant तो same है ना? Yeah, it is same. Now let's focus on t square and 2t minus t square. t से 2t है इसका interval. So I will just show you this one. से t dt 0 से t plus 2t minus t का स्क्वायर, सॉरी दिस वाज स्क्वायर, स्क्वायर dt t से 2t. अब एक काम करो, आप 2t माइनस t को क्या ले लो? कुछ भी वेरिएबल ले लो, y ले लिया हमने या फिर z ले लिया, ठीक है? सो माइनस dt विल बी इक्वल टू हाउ मच? dz, राइट? सो इसको आप चेंज करो, दिस विल बिकम z का स्क्वायर एंड dt इज हाउ मच? माइनस dz. सो दिस विल बिकम प्लस के जगह ये क्या हो जाएगा? अभी के लिए माइनस करो, माइनस dz t से 2t, ठीक है? सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. डन है? अब आप ओके अभी हमने t से 2t कर दिया, ये तो वेरिएबल 2t माइनस टी के लिए था. अब आप लिमिट सही से रखो. सो 2t माइनस टी को आपने z लिया है, पहले लिमिट था t. सो स्मॉल t का वैल्यू यहाँ पे t रख कर देखो तो z का वैल्यू तुम्हें क्या मिल रहा है? सो फॉर t इक्वल टू t, z तुम्हारा क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम हाउ मच? That will become t, right? And for t is equal to 2t, z will become how much? 0. So this will vary from t to 0. अब t से 0 है, z स्क्वायर dz है, इसको हम प्लस लिख सकते हैं ना? 0 से t z स्क्वायर dz, राइट? वी कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है? सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, यू विल बी गेटिंग व्हाट? जेड क्यूब बाई 3, दिस इज 0 से t, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? टी क्यू बाई 3, ठीक है? t, एंड हियर ऑल्सो यू विल बी गेटिंग व्हाट? फॉर दिस ऑल्सो यू विल बी गेटिंग टी क्यू बाई 3, टी क्यू बाई 3, राइट? प्लस. सो बोथ आर सेम इंटीग्रल्स, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि बोथ आर सिमेट्रिकल. ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा. ग्राफ देखकर भी हमें लग रहा था, क्योंकि एरिया अंडर कर्व अगर आप दोनों का ध्यान से देखो तो सेम है, ठीक है? देयर इज हाई सिमेट्री हियर. सो इन दोनों का इंटीग्रेशन सेम आया. कितना आया? टी क्यू बाई 3 एंड टी क्यू बाई 3. सो 2 इंटू वी नॉट स्क्वायर बाई टी का स्क्वायर कॉन्स्टेंट लिखा, एंड देन टी क्यू बाई 3 divided by 2t. ठीक है? So this will get cancelled over here, and this 2 will get cancelled. You are getting v naught square by 3. So here also, I mean RMS value अगर आप इसका root लोगे तो you are getting v naught by root 3. So answer will be same. Done है? So by looking at the graph also you could have answered it कि both will have same value of RMS thing. एंड वाई यू कुड हैव आंसर्ड, क्योंकि देखो सिमेट्री बहुत ज्यादा है. इसका टाइम पीरियड टी था, इसका टाइम पीरियड 2t था, बट 0 से t और t से 2t में एरिया अंडर कर्व हमें सेम दिख रहा है. दो आई मीन ग्राफ थिंग, आई मीन दो दो इक्वेशन थिंग है चेंज. इसका इक्वेशन कुछ और है, इसका इक्वेशन कुछ और है, बट स्टिल आई मीन they are forming same sort of area with the time axis. So there is symmetry, and that symmetry is getting reflected in the calculation also.
we got the same value. Okay, so I hope you have understood this question, but if you have any doubt, you can always let me know in the comment section. Thank you, take care of yourself, and keep solving more number of questions.